But I guess जो questioning हुई थी सारा के साथ उसके basis पे I don't think वो torture दिखाया था. I'm using the word torture by the way consciously. Right. I'm not saying it to dramatize things. जो टोका उसको indirectly कुत्ती बोला है, कहाँ से भौंक रही हो तुम, and lots of horrible comments. That later on उसको title दिया कि तुम nomination की वजह से तुमने ये किया, which is absolute lies. लेकिन अगर वो मुझे connect कर रही है कि सारा आरफीन चाहत same thing. Disgusting. I'm shocked. ये मेरा बिग बॉस का biggest shocker है अभी. The host Salman sir, उन्होंने भी एक comment किया था कि कहाँ के mind coach है आप, right? Were you hurt with that comment of Salman sir? I was very hurt by that comment with Salman. But I want to ask you, who according to you is that one contestant perhaps जो बिल्कुल ही deserving नहीं है and should never ever win आपके हिसाब से? Vivian Dsena. Okay. And you have any specific reason you want to point out? Because Vivian Dsena कुछ कर रहा ही नहीं है. वो सुबह उठता है, कॉफी पीता है, फिर जाता है वहाँ कुछ करने के लिए, फिर बाथरूम जाएगा, कपड़े धोएगा. मैं हूँ आरफीन खान और आप देख रहे हो मुझे शुभजीत के चैनल पे. Thank you. All right, ladies and gentlemen, एक और एलिमिनेशन हो गया है बिग बॉस में एंड एक जस्ट कॉमन चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जब सर घर के अंदर गए थे उसके पहले जब उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया था शक्ल पे ग्लो एंड चार्म तभी भी था, अभी घर के बाहर आए हैं वो भी. What a beautiful time around his wife's birthday. He was joking कि ये best gift हो सकता है, but then the glow and charm still remains. I think that is the best part about Arfeen Khan sir. Thank you so much. And like I told you थोड़े देर पहले as well कि थोड़े और टाइम बाद अगर आपको बाहर देखते ये इंटरव्यू कर रहे होते और मजा आता. But never mind. Let's get straight to the point. Limited time, of course. Yeah. I mean, right from the very beginning, you and Sara, despite being a couple, आप लोग अलग अलग खेल रहे थे and I'm pretty sure that was a conscious effort from your end because you didn't want your game to be influenced by her or her game to be influenced by you. Like you gave her that complete freedom, right? Yeah. But then later on a lot of things where she was perhaps backstabbed, etc. And of course she reacted to in a certain way. Sure. And of course as a husband you have your emotions over there as well. In the retrospective side of things, do you feel that कि अगर आपने उनको वो तरीके से फ्रीडम नहीं दिया होता and थोड़े बहुत अगर inputs आप अगर उनको दे रहे होते, you think that entire scenario, the way she reacted, the way she was backstabbed, everything could have been avoided? No, I don't think so. First of all, मैं even though हम लोग मैंने consciously अलग खेला, मैं फिर भी उसको बोलता day one जब मैं गया था घर के अंदर, जब मैं सबसे मिला मैंने उनको बोला keep away from Alice. ईशा एंड अविनाश, मैंने उसको बोला कीप अवे. बोलती क्यों? मैंने बोला लो मेरा प्रेडिक्शन लास्ट 15 years से बीन एक्यूरेट, डोंट डू इट. लेकिन मुझे मालूम है कि ये दिल की लड़की है, सो उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ. सो आई थिंक इज द बेस्ट थिंग आई डिड वाज टू लेट हर प्ले बाय हरसेल्फ. Correct. And reason why, because now she's on her own in the house. So therefore I know she can handle herself. She's got connections, she build bonds with people, right, with different types of people. So maybe आपको on the screen maybe आपको 1.5 hours में दिखा होगा कि मेरा connection ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी बातचीत होती थी. Maybe very silently, when we were sleeping, right, about strategy या उनकी connections. मैं उसको बार बार बोल रहा था विवियन के साथ इतना दोस्ती नहीं करो, do not do it, even though he's very charming man, very intellectual man. He will eventually break this. He will break your heart. और सबसे बड़ा पेन उसको मिला था विवियन से, टू बी ऑनेस्ट, नॉट इवन अविनाश. उसको ये दुख आया था कि विवियन जो उसको बोलते था मैं देवर हूँ, आई एम योर ब्रदर इन लॉ, उसने बाद में इन ग्रुप के साथ मिलके उसको 3 दिन का इतना टॉर्चर किया कि आई एम शॉक्ड दैट आई डोंट नो अगर दिखाया, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं अभी तक. बट आई गेस जो क्वेश्चनिंग हुई थी सारा के साथ उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक वो टॉर्चर दिखाया था. आई एम यूजिंग द वर्ड टॉर्चर बाय द वे कॉन्शियसली. आई एम नॉट सेइंग इट टू ड्रामेटाइज थिंग्स. जो टोका उसको indirectly कुत्ती बोला है, कहाँ से भौंक रही हो तुम, and lots of horrible comments that later on उसको title दिया कि तुम nomination की वजह से तुमने ये किया, which is absolute lies. I mean it's a gaslighting of a certain form, certainly.
what happens usually in shows like Bigg Boss is that, especially with couples, I've seen that in the past as well. Like, you know, if I talk about the season with Rubina, Vinav, couples के बीच में वो दूरी बनाने का कोशिश कभी-कभी लोग करते हैं, right? If I talk about Vicky and Ankita last season as well, Vicky's close affinity with certain people, उसको लेके लोग मुद्दा बना रहे थे, maybe to create some sort of fuss, right? For someone like Chahat, you know, whom perhaps you consider maybe a friend or like a sister in that case, you mentioned absolutely. sister, right? Relate karna in the same show where your wife is also there, downright offensive. What do you have to say on I'm shocked. I just found that out now. अभी मुझे बोला गया कि ईशा ने मुझे लिंक किया है with Chahat. Like disgustingly sickening. अगर हम हमारी conversations सुनोगे, they were brilliant conversations. Like उसकी family के बारे में, उसको strong बनाने में, मेरी wife भी वहाँ बैठी हुई है. You know, मेरी शाहद ने एक दफ़ा मेरी wife को बोला, you know what? आपका husband और तुम्हारा relationship इतना अच्छा है कि तुम बिल्कुल insecure नहीं हो. बोलती अगर मुझे थोड़ी सी भी insecurity दिखती, मैं तुम्हारे husband के साथ इतना you know connect नहीं करती, because मुझे मालूम है कि बीवियाँ और husband कभी-कभी jealous हो जाते हैं. Correct. And you know, I found out today कि मुझे चाहत के साथ लिंक किया is disgusting beyond imagination. और बाद में वही लाइन बोले थे कि पति पत्नी और वो कनेक्टिंग जो सारा ने बोला था गलत था, I agree. लेकिन अगर वो मुझे कनेक्ट कर रही है कि सारा आरफीन चाहत, same thing. Disgusting. I'm shocked. ये मेरा बिग बॉस का biggest shocker है अभी. Okay. Your profession, of course, you kept that outside and you went as an individual, right? But on a lot of occasions, your profession or your skills were made fun of, right? Yes. And if I talk about just the contestants, even the host Salman sir, उन्होंने भी एक comment किया था कि कहाँ के mind coach है आप, right? Were you hurt with that comment of Salman I sir? I was very hurt by that comment with Salman. But then later on मैंने understand किया कि उसका जो context था कि वो शायद I'm guessing है कि उसने कोई काउंसलर या कोई थेरेपिस्ट या कोई लाइफ कोच के बारे में सुना होगा कि ये लोग बैठते हैं और सुनते हैं, बताइए अपनी लाइफ के बारे में, और मैं वो काम करता ही नहीं हूँ. तो you're comparing apples and oranges, right? And because he later on I thought he doesn't understand that. अगर मैं उसको explain भी करूँ, it is impossible to explain what I do in a short 5-minute conversation. मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास जो clients हैं, जो काफ़ी famous भी clients हैं, और जो मेरे पास जो पब्लिक मेरे साथ काम किए वो जानते मैं क्या करता हूँ. Correct. And it's very very opposite to what therapy is, counseling is, life coaching is, जो ये सब चीज़ें. So I was upset. because आप देखोगे कि उस weekend के बाद मेरा energy कम हुआ था. Down हो गया. Down हुआ था. You were demotivated? Not demotivated. मैं खाली ये सोचता था कि जब भी मैं कुछ करूँगा लोग बोलेंगे देखो माइंड कोच है, अपनी बीवी को नहीं संभालता है, माइंड कोच है ये नहीं करता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ लुक बैड एक्टर, घटिया एक्टर, वो मुझे बोलते ओ एक्टिंग कम्युनिटी पे तुम क्या कर रहे हो. So I was a bit thinking to myself, how do I get out of this? How do I get out of mind coach का tag? And मुझे आरफीन खान को दिखाना है. Correct. You know, मेरा प्रोफेशन को मैं represent वहाँ नहीं करने गया. Right, correct. Second last question quickly. एक clip आया and it was shown that Kashish, the new entrant in the house, she was making certain comments about you know, Avinash, his physique and everything, you know, itne shredded shoulders, hai, abs, hai, this, that, basically good compliments about his body, right? Now, if you reverse the role as genders, right, say a man saying the same things about a woman's body, right? What do you have to say about the whole thing? वो कैसा फिर picturize होता है उस हिसाब से? So, first of all, I think Kashish ने joking manner में बोला, but I agree, अगर मैं कोई joking manner में same comments later, I would have been demolished, or any man would have been demolished. So I think, see, equal rights का थोड़ा challenging है, because a man can walk around with his top off, and people will not complain. A woman doesn't do that. Correct. So therefore, अगर आप एक आदमी के body के बारे में comment करेंगे, it will not look bad, because वो बीच पे भी topless जाता है. So I don't think Kashish का context. In fact, I have a very good feeling about Kashish. Okay. I think she's going to be good. She's a good girl. Okay. Good. Last question, sir. I would like to ask you. A lot of people might ask you, will ask you, कि आपके हिसाब से जीतना किसको चाहिए? But I want to ask you, who, according to you, is that one contestant, perhaps, जो बिल्कुल ही deserving नहीं है and should never ever win आपके हिसाब से? Vivian Dsena. Okay. And you have any specific reason you want to point out? Because Vivian Dsena कुछ कर रहा ही नहीं है. वो सुबह उठता है, कॉफी पीता है, फिर जाता है वहाँ कुछ करने के लिए, फिर बाथरूम जाएगा, कपड़े धोएगा. He's taken the colors का लाल tag too seriously? Yeah.
एंड लो उसने मुझे एक दफ़ा बोला था और इवन दो आई हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद हिम लेकिन आई एम अ कोच आई स्पीक ओपनली जो बोला था मैं नॉमिनेटेड हो गया आप देखना कलर्स का टीआरपी इस हफ्ते बढ़ जाएगा कम ऑन मैन दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस डजंट गेट एक्सेप्टेड सो आई थिंक ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन a very good man लेकिन I think you know आपका जो character on real life और आपका character on screen should be changed एक बात मैंने उसको जाके कान में बोली थी शायद I don't know if it was said मैंने बोला Vivian Dsena आप screen में king और romance समझो होगे TV screen पे but don't lose your character in this show because the way you are going you're going to lose that. Okay, fair enough. Limited time, limited conversation, but thank you so much for keeping your point, sir. And it's ma'am's birthday, of course. And एक आप today तो नहीं कर सकते, but मैं एक प्यारा सा तोहफा लेके आया हूँ. Maybe you can give it to her on my behalf later when you meet her and when she comes out of the house. I really appreciate it. Thank you so much and pleasure and looking forward to seeing you very soon. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that was Arfeen sir over here and of course Bigg Boss के बाहर आके और ज़्यादा निखर के आए हैं. So I'm pretty sure we'll be giving him a lot of love. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.